Good evening to one and all. Today we will be dealing with the topic cooperative learning. In our class, we have already discussed about what cooperative learning is, what are its advantages and what are its disadvantages. Today we will be discussing about its basic elements, its procedure and its phases. So moving further, I would like to give you a gist of what cooperative learning. So here is the gist of cooperative learning. In cooperative learning, the teacher puts students in small groups to do an activity together. The students take the lead in doing the activity. The teacher only provides guidance as needed. The teacher does not put the same students together for each activity, but changes the groupings. That way, students can learn from a variety of partners. So in cooperative learning, the teacher puts students in groups, lets them take the lead in doing the activity, and changes the groupings for different activities. This method helps students learn about sharing, getting along with others, and working together. Now talking about its elements and its procedure. So first we will be dealing with its elements. There are 5 basic elements of cooperative learning that are positive interdependence, individual accountability, face-to-face interaction, collaborative skills, and group processing. One by one, we will be dealing with each. So the first one is positive interdependence. The one of the very best example of positive interdependence is a relay race. I hope you all have seen relay race. See, in this picture, there is one player and he is giving the stick to the another player, and that another player will run and will give that stick to the third and similar to the fourth. And they will be working towards one very common goal, that is to finishing the race. We instead of me. It basically talks about we. When there is a relay race, no individual wins. The group members of that team wins. So working together for a common goal, each student in the same group has a unique contribution. That means that each individual in that group contribute for that common goal. Each group member's effort is required. And as example, there is a relay race. The next one is individual accountability. That means each individual is accountable for its work, accountable for contributing their own share. Every team member feels in charge of their own learning and make an active contribution. हर एक अपनी learning के लिए जिम्मेदार होता है, हर एक contribute करता है. The next point is everyone efforts count. हर एक को हम count करते हैं, हर एक के efforts count किए जाते हैं. The third basic element is face-to-face interaction. या हम कह सकते हैं promotive interaction. What it talks about कि how people in the group are interacting with each other. They must be very positive interaction. There should be a very positive environment so that every member could comfortably say what they wanted to say, with group members providing with one another what feedback, the challenging reasoning and conclusions. Perhaps most importantly, teaching, helping, supporting, applauding, and encouraging one another. That means we can say that there should no negative words or no negative words that will demotivate the members. There should be positive words or there should be positive rewards for each member's contribution. There it comes collaborative skills, or we can say interpersonal social skills. What it talks about that students are encouraged and helped to develop and practice. There should be trust building, leadership, decision making, communication, and conflict management skills. What it deals with how trust building could be there among the members, how the leader is dealing with the group members. लीडरशिप की क्वालिटीज क्या होंगी कि वो हर एक ग्रुप मेंबर को एक साथ रख सके, उन्हें मोटिवेट कर सके कि वो कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन दे,
एक कॉमन गोल की तरफ पहुंच सके, डिसीजन मेकिंग हो सके, कम्युनिकेशन बहुत ओपन हो सो दैट ईच वन कुड कंट्रीब्यूट, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट रिजोल्यूशन, आपस में कोई कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो, आपस में कोई नेगेटिव कम्युनिकेशन ना हो, हर कम्युनिकेशन बहुत ही पॉजिटिव वे में हो. मूविंग फर्दर, द नेक्स्ट पॉइंट इज ग्रुप प्रोसेसिंग. व्हाट इट डील्स अबाउट periodically assess करना कि क्या इस टीम में हो रहा है, कहाँ तक हम पहुंचे हैं, कितना सही हो रहा है, कैसे हम साथ में और अच्छे से काम कर सकते हैं, हाउ वेल दे आर वर्किंग टुगेदर, हाउ दे माइट डू बेटर एज अ टीम हम और ज्यादा कैसे बेहतर कर सकते हैं, क्या चैलेंजेस फेस कर रहे हैं हम, क्या चेंजेस हम लेकर आए जिससे कि हम फ्यूचर में उन गोल्स की तरफ और ज्यादा इफेक्टिवली और एफिशिएंटली वर्क. These are the five very basic elements that we discussed. Moving further, we will talk about its phases. What are its phases? There are 5 phases: engagement, exploration, transformation, presentation, and reflection. So one by one, we will go through this. What engagement is? Engagement is how the teacher sets the stage for the activity presented. एंगेजमेंट इज बेसिकली कैसे जो टीचर है वो उन बच्चों को अपनी सारी जो भी उन्हें हमने प्रॉब्लम दिया है कोलैबोरेटिवली उस चीज को सॉल्व कर सके, कैसे उसको हम स्टेज कर रही है, कैसे टीचर उसको प्रेजेंट कर रही है उस एक्टिविटी को. द नेक्स्ट वन इज एक्सप्लोरेशन. इट डील्स अबाउट स्टूडेंट्स वर्किंग, कैसे जो स्टूडेंट्स है वो एक्सप्लोर करेंगे आइडियाज या इंफॉर्मेशन इनिशियल लेवल पे. ठीक है. The next one is transformation. Transformation deals with कैसे students gather करेंगे उन thoughts को about their information, उन information को. Next one deals about presentation. Now it's students. Again, this comes to students कि कैसे student उस चीज को अपनी जो information उन्होंने gain किया है या जो भी उन्होंने ideas explore किए थे उसके बाद उन्होंने gather किया है उन thoughts को कैसे वो उसको present करेंगे. रिफ्लेक्शन, इसमें क्या होता है स्टूडेंट एनालाइज करते हैं कि हमने क्या क्या सीखा है, क्या इसकी हमारी जो लर्निंग है उसकी वीकनेस है, क्या उसके स्ट्रेंथ्स हैं और किस तरीके से ये जो लर्निंग प्रोसेस है मतलब उस पूरी लर्निंग प्रोसेस को एनालाइज करेंगे एंड रिफ्लेक्शन देंगे उस पे. सो द नेक्स्ट काम इज प्रोसीजर. प्रोसीजर होना चाहिए, क्या प्रोसेस होना चाहिए कि हम कोलैबोरेटिव लर्निंग अप्रोच को इम्प्लीमेंट कर सकें. तो दिस इज द होल प्रोसेस. दैट वन फर्स्ट वन इज प्री इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग, then introduce the activity to the students, monitor and intervene, assessment and process. One by one, we will be looking. So the first one is that is pre-instructional planning. So in this, what happens? There is a role of teacher. Teachers are required to do pre-active phase. Planning for the effective teaching by using cooperative learning approach. In this, teacher will plan how he or she should set the stage that we can correlate it with the engagement phase. Then what teacher can select the topic, plan about the instructional objectives, select the appropriate strategy, grouping the procedure that which members will collab in one group in this way. Assessment criteria, what will be the assessment criteria that at the end how he or she what or we can say how the teacher will evaluate. The next come is introducing the activity. The here is also the role of teacher came. The teacher will introduce and orient the students regarding the particular planned activity. That means कि teacher बताएगा कि क्या activity आप लोगों को करनी है, किस goal को आप लोगों को achieve करना है, objectives क्या है, असाइन करेगा इंडिविजुअल्स रोल कि हर एक का क्या क्या रोल है, इन्फॉर्म करेगा टाइम लिमिट कि आप इस एक्टिविटी के लिए आपके पास 5 मिनट है या 2 मिनट है करने के लिए. इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी, कैसे इंडिविजुअल उसके लिए अकाउंटेबल होगा. एनकरेज करेगा हर एक मेंबर को कि सारे के सारे मेंबर्स उस एक्टिविटी के लिए में पार्टिसिपेट करें और एक्टिवली पार्टिसिपेट करें. थर्ड कम्स मॉनिटर एंड इंटरवेन. ये टीचर है का रोल है कि वो कॉन्टिन्यूसली मॉनिटर करता रहेगा स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को, चेक करेगा कि स्टूडेंट्स अपनी मतलब जो भी वो वर्क कर रहे हैं क्या वो उसका डायरेक्शन सही है, क्या वो अपने गोल की अचीव करने के लिए वर्क परफॉर्म कर रहे हैं. प्रोवाइड करेगा उन्हें, तुरंत उन्हें फीडबैक देगा अगर वो कहीं भी गलत जा रहे होंगे तो इंटरवीन भी करेगा, बीच में इंटरप्ट करेगा, उन्हें बोलेगा कि आप अपना डायरेक्शन थोड़ा सा देखें जिससे कि वो उस गोल को आसानी से बिना उस गोल की तरफ से भटके उसे अचीव कर सके.
इंटरवीन इफ रिक्वायर्ड, जहां जरूरी होगा सिर्फ वहीं पे ही अपना इंटरवेंशन दिखाएगा, रीइंफोर्स करेगा स्टूडेंट्स को। द फोर्थ वन इज असेसमेंट। टीचर असेस करेगा इंडिविजुअल को एक एज अ ग्रुप परफॉर्मेंस और इंडिविजुअली भी, मतलब कि वैसे तो मेनली हम जब कोलैबोरेटिव लर्निंग की बात करते हैं तो हम ग्रुप में उस परफॉर्मेंस को एक्सेस करते हैं, इंडिविजुअली वो उन्हें वो सजेस्ट करेगा, फिर इन्फॉर्म करेगा स्टूडेंट्स को उनके ग्रेड्स के बारे में। फिफ्थ वन इज प्रोसेस, ये लास्ट स्टेप है, यहाँ पे टीचर ग्रुप को रेट करेगा, बोलेगा कि आप सेल्फ असेसमेंट करो, अपने ग्रुप के लिए खुद से रेट करो अपनी परफॉर्मेंस, और देखो कि क्या हाँ आपके फ्यूचर गोल्स, कैसे आपको अपने फ्यूचर गोल्स सेट करने हैं, कहाँ आपको इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, इस तरीके से। दिस इज द लास्ट स्टेप। Thank you for this session. I hope you all have understood about what cooperative learning is, what are its advantages, disadvantages, its procedure, phases, and as well as its procedures and elements. Thank you for the session.